So hello everyone and welcome to Career Launcher. So I hope you all are aware that I have told you even yesterday also that on Monday and Tuesday 3 p.m. we are having this class where we are doing the current affairs revision. So yesterday also at 3 p.m. we did current affairs revision for of course upcoming SLAT exam, and today also we are doing a current affairs revision. Tomorrow at 5 p.m. We'll be having a victory lab series where we will discuss the previous year questions and things around it. Okay, for SLAT. Okay, yes. So let us begin. I think I'm audible, visible, everything is fine. Yes, good afternoon, Kushagra. Is my voice clear? Hopefully. Awaaz clear hogi, hai na? So let us begin with the first question. So Draupadi Murmu this year conferred how many Padma Awards for the year 2025? And I've told you about these things. There is highest civilian award. What happened? The highest civilian award in India is Bharat Ratan. क्या हो गया? Bharat Ratan. And there are 3 Padma Awards. है ना? So Padma Awards are generally given every year except 2 occasions. Bharat Ratan is not given every year. है ना? ये सब मैंने बताया. ठीक है. So this year we have seen है ना 139 Padma Awards, 7 Padma Vibhushan, 19 Padma Bhushan and 113 Padma Shri. इससे मैंने बताया कि भारत रत्न विनर्स का नाम बताया 2019 का, 2024 का, है ना? We have discussed it. Why I'm telling you 2019 के भारत रत्न विनर थे भूपेन हजारिका, one of them, and 2024 में there were 5 winners. We have seen question in AILET, है ना, कि which of the following is not a Bharat Ratna awardee winner, है ना? So Ratan Tata was the answer. ठीक है. So ये सब बताया हुआ. So that's I'm just revising those things. Recently Dash joined a list of 31 wetland accredited cities in the world. This is a revision, fast revision है. आप आंसर करते जाओ. I'll be very happy to know. ठीक है. If you are able to answer it, तो हमको लगेगा कि अच्छा आपकी तैयारी अच्छी है ना? Keep on answering. Yes, Parth, CLAT aspirant, you both are right. Indore and Udaipur were added in wetland cities. Ramsar Convention के अंदर wetland cities में नाम ऐड किया गया. And please tell me how many Ramsar sites are there in India? ये तो Ramsar cities की बात हो रही है. How many Ramsar sites are there currently in India? What is the answer? So recently, है ना, 3 sites from Bihar were added. Gogabir Lake, Gokul Jalashay and Udaipur Jheel, and now we are having 94. Very good. People are writing in the comments. I'm very happy to see कि आप लोग आंसर कर पा रहे हो. Gogabir Katiyar, Gokul Jalashay Buxar and Udaipur Jheel West Champaran. है ना? Yes, very good. Next is Niti Aayog की Fiscal Health Index. Who released it and which state is the strongest? So it was for 18 states only, not for all the states. So currently we are having 28 states and 8 union territory. इतना तो पता होगा. We have 28 states and 8 union territory. So this fiscal health index of Niti Aayog talked only about 18 states, and this was released by Dr. Arvind Panagaria. ठीक है. इसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस ओडिशा का है. Best and the worst performance out of these 18 states is Punjab. Lowest. Okay, very good. Kushagra, CLAT aspirant of these are all right, है ना? फिर ऑस्कर अवार्ड ये भी न्यूज में था इस साल. सो ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड कुछ प्रोमिनेंट चीज आपको पता होनी चाहिए. बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, ये सब पता होना चाहिए, है ना? जैसे बेस्ट फिल्म इज अनोरा, बेस्ट एक्टर इज एंड्रियन ब्रूदी फॉर ब्रूटलिस्ट, बेस्ट एक्ट्रेस मैकी मेडिसन फॉर अनोरा एंड बेस्ट डायरेक्टर सीन ब्रेकर फॉर अनोरा. ठीक है. एटलीस्ट ये 4 याद होना चाहिए. ठीक है. दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक फिश. ये बताया था, ये लेट में क्वेश्चन आ गया. ये बताया था ना. दिस वी हैव डिस्कस्ड इट. I think ये फरवरी या मार्च की करंट अफेयर्स में था. As far as I remember, फरवरी करंट अफेयर्स में. And I told you at that time कि सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट बना है एग्रीकल्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ऑर्गेनिक फिशरीज भी अब यही हो रहा है. ए इज द राइट आंसर, है ना? 2015-16 में ऑर्गेनिक स्टेट बना था, और ये मैंने बताया. ठीक है. यस, ऑर्गेनिक फिशरीज. वेरी गुड. सर गैरफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024. ये कम चांस है, बट जस्ट हैव एन आइडिया, है ना? जसप्रीत बुमराह को मिला था मेल कैटेगरी में. नेक्स्ट मूव ऑन. देखो नासा एस्ट्रॉइड कौन से एस्ट्रॉइड पे गया, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. आई थिंक इन सम एग्जाम, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट ये पूछा था किसी में कि नासा का एक मिशन है, ओसिरिस रेक्स इसका नाम है ना? नहीं, इसका नाम क्या है? यस, ओसिरिस रेक्स. ओसिरिस रेक्स मिशन जो एस्ट्रॉइड बेन्नू पर रिसर्च करने के लिए गया ना. सो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है. यस, है ना? The next one, yes,
The next is International Cricket Council has recently confirmed that Dash has decided to step down as ICC CEO, Chief Executive. So Geoff Allardyce actually stepped down, and now we are having a new Chief Executive Officer. So Mr. Jay Shah is the chairman, deputy chairman is Imran Khaja, CEO is Sanjay Gupta. ठीक है, general manager is Wasim Khan. So ये सब ध्यान रखिएगा थोड़ा सा. Now currently the headquarters is in Dubai, International Cricket Council. ठीक है. Let's move on to the next one. Now please answer me this question. Global fast food giant Dash is setting up global capability center in Hyderabad. क्या है answer? Yes, good afternoon Chandrika, welcome to the class. Please keep on answering. We are doing a fast current affairs revision. Tomorrow at 5 p.m. we will have a victory class where we will discuss previous year question of SLAT and things related with that. ठीक है. Right answer is option C, McDonald. No, launching first global capability center. That was very much in the news. Very good. People are answering. I'm very happy to see. C is the right answer. Indian Air Force. This is very important. And a captain, which famous personality went to the International Space Station? Axiom 4 mission. One of the person was from India. His name is Captain Subhanshu Shukla. He is the right answer to this question. है ना? ये पता होगा. Axiom 4 is a mission of America. Along with it's a private US private space agency. Along with NASA, they have sent 4 people. One of them actually is Captain Subhanshu Shukla. Here it is. Okay. And we have taken a separate class. Please watch it if you have time, because they can ask questions from this. Read about International Space Station, etc. Next is, what is the new tax exemption limit and a new tax regime for individuals? So this was announced in the budget, and I'm sure you must be aware of it. 12 lakh rupees. So B is the right answer. Ye काफी famous हुआ था, so I believe you all should be knowing it. In the budget, FDI limit for insurance sector was increased from where to where? Yes, इससे पहले का B आंसर था. Very good, people have answered. So पहले 74% था, अब 100% कर दिया गया. From 74% to 100%. ठीक है. Earlier it was 74, now it's 100. The next is, what is the theme of World Wetland Day? So 2nd February is celebrated as World Wetland Day because 2nd February 1971 Ramsar Convention was signed. This is a previous year question of CLAT. है ना? So World Wetland Day theme बताना है. Protecting wetlands for our common future. B is the right answer to this question. ठीक है, World Wetland Day. Yes, Ramsar is the city in Iran. Very good. ICC Under 19 World T20 Cup 2025. Who won? So the right answer is option C, South Africa. ठीक है ना? India won. नहीं, who actually India won by defeating whom? Sorry, this was the question. So the right answer is C. ठीक है. So India won by defeating South Africa. ठीक है. Okay, that is what you should be knowing. Hosted in Malaysia. ठीक है. India won the second title by defeating South Africa. Next is Grammy Award for Best New Age Album. Who won in 2025? And she's actually Indian origin lady. And that is why you should be knowing it. The right answer to this question is, बताइए, option C. Yes, Chandrika Tandon. Grammy under category of Best New Age Album for Triveni. So her work is called as Triveni, for which she has got this. Okay. Okay. And she's actually a cousin sister, I think, older sister of Indra Nooyi, the CEO of Pepsi company. नहीं, ये yesterday नहीं हुआ है, कुशाग्रा. ये monthly current affairs अगर आपने देखा होगा तो आपको revision में मिला होगा वहाँ. So we are doing the revision. PM Dhan Dhanya Krishi Yojana primarily targets how many low productivity districts? So basically this was announced in this year budget that 100 low productivity districts where the agriculture productivity is very less. So those districts will be specifically targeted, and already existing 36 government schemes will be implemented effectively. That is the idea behind Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana. Okay? So increase the productivity. The next is International Big Cat Alliance headquarter where? Where it is headquartered? How many big cats are there? Who is the Director General? Who is the President of International Big Cat Alliance? All is related with India, and that is why you should be knowing it. This is an India's initiative, like International Solar Alliance. This is also an India's initiative. And so when we completed 50 years of Project Tiger, this initiative was started. And yes, President is the Environment Minister of India, Mr. Bhupendra Yadav, and
द डायरेक्टर जनरल इज डॉक्टर एस पी यादव, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, है ना. ये हो गया. दीज आर 7. आप देख सकते, दीज आर 7 बिग कैट्स. ठीक है. ओके. द नेक्स्ट वन इज, हाँ, why did Panama withdraw from China's Belt and Road Initiative? So China का Belt and Road Initiative we have discussed. Donald Trump came to power and decided कि I will capture Panama, etc. and all. So this was very much in the news, है ना. Because Panama की जो location, it connects Atlantic and Pacific, very strategic location. We have discussed so many times, even in the AILET revision series. Yes, B is the right answer. Primary goal of NASA's SpaceX space telescope. ये सभी पूछते हैं. They're asking questions about the NASA's mission, like Osiris Rex पूछा हुआ exams में. SpaceX mission है to map the entire sky with infrared radiations. So B is the right answer, and I'm sure you must be aware spectrophotometer for the history of the universe, epoch and reionization and ICS explorer. आजकल full form अगर ये पूछा जा रहा है ना, so आपको बताना चाहिए. Near infrared, तो ये electromagnetic spectrum है और infrared यहाँ पर आता है. This is infrared. B is the right answer to this question. The next is recently food tech giant Zomato announced it will officially change its name to Dash. बताइए. Zomato बहुत फेमस है, आपने जानते हो, ऑनलाइन होम डिलीवरी खाना मिलता है ना. So इन्होंने अपना नाम चेंज करके इटर्नल कर दिया. B is the right answer to this question. ठीक है. That is what you should know, है ना. Next is recently scientists in Dash have produced world's first genetically modified horses. देखो कितना अच्छा फास्ट डिवीजन हो जा रहा है ना. What is the right answer? Horses. Argentina. A is the right answer, है ना. So which technology is used? I have told you CRISPR-Cas9 gene editing tool है. Biological scissor, gene editing tool, ये सब word लिखा जाता है CRISPR-Cas9 के लिए. A is the right answer. Which of the following countries recently voiced significant concern as close Pacific partner of the Cook Islands to sign a deal with China? पता क्या पूछेंगे? Cook Island recently in news is in which ocean? ऐसे भी पूछ सकते हैं. And who has raised the concern? So New Zealand has raised the concern. So Cook Island कौन से कहां पे मिलेगा आपको? Which ocean? Yes. So China did a deal with Cook Island in Pacific Ocean recently, and New Zealand was unhappy because maybe there might be a naval ships that may be allowed to be stationed here. Similarly, 3 years back, somewhere here is a Solomon Island. Okay. So China did a deal with Solomon Island, and at that time, in different exam, this question was asked कि कहाँ है वो? So Pacific Ocean में. हाँ, दक्षिण प्रशांत महासागर, right? हाँ, Pacific Ocean, South Pacific, right? So New Zealand was fearful of that or raised the concern regarding it. Union Defense Minister inaugurated Asia's biggest Aero India show where? Please tell me. These are basic things. The right answer is Bengaluru. C is the right answer, है ना? Runway to a billion opportunities. Yes. The next one is joint military exercise Cyclone 2025 happened in Rajasthan. So this is a joint military exercise between India and which country? So the answer is, what is the answer? Keep on answering it fast. A fast division है ना. India and Egypt is the right answer. आप देख सकते हो. Mahajan Field Firing Range is the right answer. The next is India recently got dash out of 180 countries in the Corruption Perception Index 2024. It is released by international level NGO called as Transparency International, UK based NGO, and India has got I think 96 rank, है ना? Corruption Perception Index released by Transparency International. Yes, very good. I'm very happy to see that you all are responding it. So this is very good because से अच्छा लगता है कि आप लोग जो है you all are prepared well. अंत्योदय and सर्वोदय. अंत्योदय and सर्वोदय एक लाइन बताते हैं. So those especially working for those who are at the last bottom of the society, like working for the poor or ensuring that the poor should get the benefit of the development. That's the one line idea of Antodaya. Sarvodaya भी similar to that है. Sarvodaya में वही चीज है कि everyone should do some menial work so that we can get to know the, or we should do everyone should do physical work, I would say, not menial, physical work करे ताकि we should get an idea about how difficult it is, and we should have sympathy with those who are working doing physical labor. ठीक है. सो अंत्योदय सर्वोदय उसी से रिलेटेड है. बट व्हाई आर यू आस्किंग दैट? कहीं पूछा गया क्या? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, है ना. सुनीता विलियम्स एंड बच विलमोर 8 to 10 days, है ना. They actually originally had gone last year in June for hardly 8 to 10 days, but they got stuck for 9 to 10 months.
So they had gone through Boeing Starliner. इसका नाम भी पूछ रहे. They had gone through Boeing Starliner, but it actually was developed some malfunction, like it started malfunctioning it, and that's why they could not come back through the same Starliner. And that is why later on SpaceX sent the mission to bring them back. है ना? SpaceX is owned by Elon Musk. किसी और को भेजना पड़ा वापस लाने के लिए ना. You can watch this. Joint India Japan joint military exercise. ये सब बताया हुआ है, बताइए. Dharma Garjan, C is the right answer to this question. Yes, Kushagra Parth. Jotham Napat has been elected as the new Prime Minister of which country? So this was actually in the news, one out two, because Lalit Modi, the founder of IPL, had gone there and he had got the citizenship. So later on, when the Prime Minister got to know, he actually cancelled the citizenship, etc. and all, and it asked for returning the passport. One out is in which, like ocean, I would say, which water body? ठीक है. So again Vanuatu भी यहीं पे, वही सोलोमन आइलैंड वगैरह के आसपास, यहाँ पे Vanuatu in Pacific Ocean. ठीक है. The next one is new Chief Election Commissioner of India. He was appointed in February and he was very much in the news. Gyanesh Kumar, है ना, काफी ज्यादा न्यूज में थे. The outgoing was Rajiv Kumar. Mr. Rajiv Kumar, he left, he retired in February. And yes, Shri Gyanesh Kumar, Chief Election Commissioner, and Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi is the election commissioners. Right answer is B. Let's move on to the next one. Who has been recently sworn in as the Delhi's 4th woman chief minister? Rekha Gupta ji, है ना? C is the right answer. And opposition leader कौन है? Leader of opposition is, I think, Atishi, है ना, in the Legislative Assembly, because Mr. Arvind Kejriwal lost the election. Yes. C is the right answer. First woman chief minister कौन थी? वो आप बताइए. Please tell me. Yes. She is the 4th woman CM. First woman CM of Delhi बताना है. Find out. ठीक है. Next, we have recently completed, Indian Meteorological Department has completed its birthday, a milestone. है ना? Open Air Art Wall Museum open किया गया था. 150th birthday था. C is the right answer. First woman CM was, let me check it even. I think Sushma Swaraj, first woman CM of Delhi. Yes, Sushma Swaraj. And first CM of Delhi was that person? 1990s में होगा ना? Chaudhary Brahm Prakash. 1952 से 55. हाँ. First CM of Delhi भी याद रखिएगा, Chaudhary Brahm Prakash, and first woman CM Sushma Swaraj है ना? हाँ, very good. People have answered it. हाँ. ठीक है. Next, who has been recently confirmed as the new FBI director by US Senate? है ना? ये भी काफी न्यूज में आता है ना? Kash Patel, Indian origin person. C is the right answer. ठीक है. Tech was. Yes, the next one is fastest Indian bowler to reach 200 ODI wickets. Right answer is Mohammad Shami. C is the right answer, है ना? Next is who has been recently appointed as second principal secretary to Prime Minister Modi. So there is already one principal secretary, and the second one is actually the outgoing RBI governor, Mr. Shaktikanta Das. So there is already PK Mishra. The other one is principal secretary 2 is Shaktikanta Das, है ना? And the new RBI governor is Mr. Sanjay Malhotra, because the post is now vacant after Shaktikanta Das left. Next is world's first quantum computing chip by Microsoft, है ना? ये भी important है because Google का पूछे थे. By topological core, है ना? So the right answer is Majorna 1. ये Microsoft का है, Majorna 1, very important. ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में आया था ये. Why? Because Google का they asked, Willow chip was asked in the AILET exam, I think. And this is very important. First quantum processing chip by Microsoft, Majorna 1, very 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 important. ये quantum computing से related है, ठीक है? Quantum processing unit है, ठीक है? Quantum technology we have discussed. Qubit मतलब भाई quantum bit. आजकल quantum technology काफी न्यूज में, ठीक है? So please remember it, है ना? Times Women of the Year 2025 list में only Indian women on that list. Please tell me. I'm very happy to see if you answer me. Dr. Purnima Devi Burman is the right answer. Wildlife biologist from Assam, only Indian woman in that list.
and A is the right answer, है ना. और person of the year last year was Mr. Donald Trump, है ना. Who was leader of opposition in Delhi Legislative Assembly? मैंने बता दिया, आतिशी, because Mr. Kejriwal lost the election. So D is the right answer to this question, है ना. From Kalka ji. Next is India is set to develop its first offshore airport. Offshore मतलब समुद्री तट से थोड़ा सा दूर जाकर के पानी में, मतलब पानी में जैसे इसकी of course जमीन रहेगी. Not exactly on the shore, but slightly away from the shore. So offshore कहते हैं. So right answer is मुंबई के आसपास होगा. ठीक है, वधावन में एयरपोर्ट खोलने की बात हो रही है. ठीक है भाई, वधावन जहाँ पे पोर्ट वगैरह बन रहा है. ठीक है, दैट्स व्हाट यू शुड. वही मुंबई के आसपास. आई थिंक नॉर्थ फ्रॉम मुंबई होगा, मुंबई से थोड़ा नॉर्थ. ये मुंबई है ना, यहाँ पर है वधावन समवेयर, है ना. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, व्हाट इज इंडियाज रैंक? ये चारों गलत है, मतलब अभी ये पुराना रैंक है, 2024 का नहीं 2025 का आपको बताना है. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, व्हाट इज इंडियाज रैंक एंड हु कम्स अप विद दिस रिपोर्ट? Very good. And who comes up with this report? रिपोर्ट कौन लाते? 38 वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. कहीं पे लिखा होगा, नहीं लिखा है, चलो मैं बताता हूँ. हाँ, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, व्हिच इज हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा. दे कम्स अप विद ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. टॉप में आई थिंक स्विट्जरलैंड था, एक बार चेक कर लीजिए, बट एज फार एज आई रिमेंबर इट वाज स्विट्जरलैंड. यस, पीपल आर राइटिंग. हाँ. Okay, the next one is birth rate in this country is falling, and they are actually very concerned about that. And this the reason is because of delayed marriage and elderly population rises, etc. are happening. ठीक है. Yes, actually बहुत जगह हो रहा है, but most serious is in Japan. But we are witnessing even in North Korea, even in South Korea, even in Italy. I think in Russia also, in many other countries, even to some extent China also. But that's why they have changed from one child policy to 2 and now even 3 child policy. Okay. Overall, we are witnessing a lot of places where the birth rates are falling. But Japan में काफी सारे serious बात है. ठीक है. The next is new chairman of SEBI, Securities and Exchange Board of India. The outgoing SEBI chairperson was Madhavi Puripuch. She was the first woman chairperson. Now she has left it, and now we are having a new SEBI chairperson. His name is Mr. Tuhin Kanta Pandey. So A is the right answer. The next is name the autobiography of Nobel Peace Prize winner Kailash Satyarthi. He got Nobel Peace Prize in 2014 along with Malala Yousafzai from Pakistan. And actually Kailash Satyarthi, Mr. Kailash Satyarthi runs an organization called as Bachpan Bachao Andolan, where actually he talks about like his idea is to stop child labor. Hai na? That's the idea. So he wrote a book called as Diya Salai. Is the right answer. Very good. Donald Trump signed an executive order. I think it's a very easy question, and I believe you all should be answering it. Official language of US, English. Yes. Let's move on, है ना? So I'm very happy that you all are answering it. और आप लोग आंसर कर रहे हो और एक्स्ट्रा भी बता रहे हो, जैसे बचपन बताओ आंदोलन किसी ने लिखा, एक्सप्लेन कर रहे हो. That's a very great thing because हाँ, I feel happy कि आप लोग ने तैयारी अच्छी की है. Which of the following will host G20? Will क्या आप तो पास्ट हो गया, hosted the G20 summit in 2025. And G20 में 19 countries plus entire European Union plus entire African Union is there. So South Africa, Johannesburg actually is the city. है ना? Very good. I'm very happy to see that you all are writing the city name as well. ठीक है, so A is the right answer to this question. ठीक है. अच्छा, मैं 4 ऑप्शन देता हूं, आप बताओ इसमें से which one is not a member of which of the following is not a member of G20? I think you can answer it. Like, ये तो बहुत आसान हो गया है, वैसे ऑप्शन ऐसा दे दिया कि नॉर्थ कोरिया से ही पार्टिसिपेट नहीं करता है ना? सो नॉर्थ कोरिया इज नॉट अ मेंबर. यस, ठीक है, वो अपना अलग है उनका. ओके, देखो ये मैंने पढ़ाया है करंट अफेयर्स में, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा एक्स्ट्रा उन्होंने पूछ दिया था. आई विल शो यू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द मंथली करंट अफेयर्स क्लास. 25th आईफा अवार्ड्स कहां हुआ? So the answer was Jaipur, and I told you that please read at least 4 things. Generally यही 4 चीज पूछी जाती है ना? जयपुर में हुआ, और एक्चुअली क्या है, 4 चीज ये था कि बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस पढ़ लेना.
But unfortunately question was not from these four. They had asked about, ये भी नहीं पूछा, ये भी नहीं पूछा, यहां आ गए और बेस्ट सीरीज पूछा, पंचायत सीजन 3. दिस वाज आस्क्ड इन द AILET एग्जाम. बट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज इफ आई टेल यू कि सब पढ़ के आओ तो आपको याद ही नहीं रहेगा, है ना. इट्स वेरी डिफिकल्ट. लाइक आई कैन पुट हियर एंड से कि सब याद करके चले जाओ, है ना. बट जनरली एग्जाम में यही 4 से क्वेश्चन आता है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, राइट, है ना. बट व्हाट कैन वी डू, ठीक है. बस वैसे ये मैंने यहाँ पढ़ाया था, ये उसी का स्लाइड है. वी हैड डिस्कस आई थिंक इन मार्च करंट अफेयर्स एज फार एज आई कुड रिमेंबर. चलो इंटरनेशनल वुमेन्स डे ये पढ़ाया हुआ था, है ना. दिस केम लाइक आई एम टीचिंग फ्रॉम द सेम स्लाइड व्हिच आई टॉट फॉर द मंथली करंट अफेयर्स. बस वो रिवाइज करा रहे फास्ट में, है ना. सो 8th March होपफुली यू ऑल शुड हैव आंसर्ड इट, ठीक है. तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे नहीं बन पाएंगे या तुक्का लगाना पड़ेगा, बिकॉज कुछ तो ऐसे आएंगे, है ना. ये उसका थीम था. हाँ मैंने ऑस्कर्स पे भी क्लास लिया था, राइट, कृषि सत्य. हाँ नेक्स्ट है प्रिट्जर प्राइज. प्रिट्जर प्राइज ये आर्किटेक्चर का एक बहुत फेमस अवार्ड है. दिस वाज गिवन टू विच पर्सन? लियू जैकुन इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, है ना. नेक्स्ट है सिक्योरिटी बेल्ट 2025 इज अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? The right answer is option A, Russia, China and Iran, है ना. And it actually happened in Chabahar port. मैंने कितना बार चाबहार पोर्ट बताया है, and we have seen question in CLAT this year also, है ना, from Chabahar port. Which of the following cricket teams recently won Champions Trophy 2025? ये तो बता दो, है ना. डी, इंडिया ने जीता था बाय डिफीटिंग न्यूजीलैंड, है ना. पाकिस्तान और यूएई में मैचेस हुए थे. CPRI report, which of the following was the largest importer of major arms in the world? Stockholm International Peace Research Institute comes up with this, and now it is Ukraine because, of course, because of Russia-Ukraine war. Anna, yes, very good. Most terrorism affected nation according to Global Terrorism Index. So बुर्किना फासो यहाँ ना एक साल में ऐसे लास्ट ईयर में देखा था, इन 1 year वी हैव सीन 2, 3, 4 टाइम्स मिलिट्री कू. कई बार कू आता रहता है, पता नहीं क्या क्या होता है इस रीजन. हाँ ये सब रीजन बहुत अफेक्टेड है एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट से, साहेल रीजन वगैरह में. सो बुर्किना फासो यू विल सी कि कई बार देखोगे कि आता रहता. हाँ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री अक्सर ही न्यूज में रहता है फॉर सम वायलेंस और समथिंग लाइक दैट. मॉरिशस हाईएस्ट ऑनर. अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ. Mauritius highest honor was given to Modi ji, ठीक है. And I still remember, Grand Commander of the Order of Star and Key of the Indian Ocean. I still remember I showed this map कि Mauritius यहाँ पर है. Why I'm telling you? Because this year in CLAT a question came asking about which of the following is not a member of SARC. और इसमें कंफ्यूज कराने के लिए एक ऑप्शन था मालदीव्स एंड थर्ड ऑप्शन था मॉरिशस, ऐसा कुछ, राइट. So why I am showing the maps again and again, ताकि आपको याद रहे कि सार्क कंट्री सर बोले थे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशिया. सो ऑटोमेटिकली इट विल हिट यू कि हाँ यहाँ पे तो मालदीव्स है एंड दिस वन इज मॉरिशस. दिस वाज द रीजन आई यूज्ड टू शो द मैप. तो आपको फॉरन हिट करेगी तो बहुत ज्यादा नीचे है मॉरिशस, साउथ एशिया में तो नहीं है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में. आई स्टिल रिमेंबर आई टोल्ड यू कि मॉरिशस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में. That is the reason why I used to show the map, because exam hall में एकदम foreign hit करेगा. Yes, Krishi says very good. I showed the map of Japan also showing that it has not recognized Palestine, and that question came in AILET. Yes. इसीलिए होता क्या ना कि ऐसे रटना बहुत मुश्किल होता है. मैप से आपको बहुत सी चीज याद हो जाती है. देखो साउथ एशिया फॉरेन जैसे आप बोलोगे आपको याद आ जाएगा यहाँ पे कहीं पर है कुछ, है ना. अगर एग्जैक्ट कंट्री पे नहीं याद होगा तो आपको इतना याद होगा कि हाँ ये रफली ये सब रीजन में साउथ एशिया आता है, सार्क, ठीक है. एंड यहां पर अगर मॉरिशस लिखा है तो दिस विल नॉट बी द आंसर. एंड आई स्टिल रिमेंबर मैंने किसी पैच में ये बोला था कि मालदीव्स और मॉरिशस में कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में. दिस आल्सो आई रिमेंबर, ठीक है. मालदीव्स इक्वेटर से गुजरता है, मॉरिशस काफी नीचे. हाँ 2027 की क्लास शुरू हो गई, घबराओ नहीं, ठीक है. क्लैट एस्पिरेंट जो कीप ऑन लाइक आप अखबार पढ़ना शुरू कर दो, विल बी हैविंग क्लासेस, ठीक है. एकदम टेंशन नहीं लेना,
कोड होकर के, है ना. Who has become the first woman to be appointed Secretary of Department of Legal Affairs in India's Ministry of Law and Justice? ये इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वुमेन, है ना. इस तरह क्वेश्चन आ सकता है. अंजू राठी राणा, बी इज द राइट आंसर. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. वेट, हाँ, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रामसार अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइस यूज, ये बता दो. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जयश्री वेंकटेशन. ठीक है, ठीक है. फॉर्मर फिलिपीन प्रेसिडेंट, ही वाज अरेस्टेड बाय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फॉर व्हाट पर्पस, फॉर व्हाट रीजन, किस कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया? फॉर्मर फिलीपींस प्रेसिडेंट रोड्रिगो दुतेर्ते, फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी लिंक्ड टू हिज एंटी ड्रग कैंपेन. तो उन्होंने कहा था कि हम एंटी ड्रग कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा गया कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट रोम स्टैट्यूट से बना है 2002 में, है ना. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, है ना. सो ये फिलीपींस, कैपिटल इज मनीला, एंड इन द कैपिटल ऑफ फिलीपींस यू विल फाइंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना. एशियन डेवलपमेंट बैंक में जापान और यूएस का सबसे ज्यादा शेयर है ना. नेक्स्ट है ISFR, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट. हाउ मच फॉरेस्ट एंड ट्री कवर टोटल इज देयर इन इंडिया? The right answer is option C, है ना. 25.17%. So 21.76% फॉरेस्ट है और 3.41% ट्री कवर है. ट्री कवर ऐसे कि there are some areas which is having tree but it is not under forest region, officially not defined as forest. ठीक है, तो उसको अलग से भी देखा गया. तो टोटल मिला के, so if you add 21.76 plus 3.41, it will be 25.17. So C is the right answer. Third women's Premier League title. हाँ, टारगेट इज 33%, राइट. हाँ, थर्ड वुमेन्स प्रीमियर लीग और वुमेन्स IPL कह लो, है ना. सो आई थिंक मुंबई इंडियन वन, है ना, बाय डिफीटिंग दिल्ली कैपिटल्स. यस, आगे चले. हाँ, टाटा स्पॉन्सर का था, ये सब पता होना चाहिए, है ना. इसरो सेकंड स्पोर्ट कहां, स्पेस स्पोर्ट कहां बनने जा रहा है? कोलासेकरीपट्टनम. वेयर इट इज, इन विच स्टेट? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, तमिलनाडु. ये मैंने बताया आपको कई बार. यहां पे फर्स्ट वाला यहां पर है श्रीहरिकोटा आइलैंड, सतीश धवन स्पेस सेंटर, विच एक्चुअली इज ऑन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, बट दे बिलोंग टू आंध्र प्रदेश. एक और मैंने बताया, देयर इज इन केरला थुम्बा, बट दिस इज नॉट फुल फ्लेज रिकॉग्नाइज्ड एज स्पेस सेंटर, तो इसीलिए इसको फर्स्ट माना गया है, तो इसको सेकंड माना जा रहा है. सो दिस इज कंसिडर्ड सेकंड. हाँ, सो कोलासेकरीपट्टनम, ये जो है ना, ये थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट के आसपास है, वही मतलब तमिलनाडु के एकदम सदर्न टिप पे कहीं पे समवेयर. नेक्स्ट इज लेवाटोबी लाकी लाकी वोल्केनो, कहां इरप्ट हुआ? इंडोनेशिया. देखो लास्ट में आई है, यहां आई है, यहां आई है, तो ऐसे याद रखिएगा इसे, इंडोनेशिया. दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड, टू रिमेंबर इट. ठीक है, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, है ना. और आपको पता, अगर आप प्लेट बाउंड्री देखो, ये पूरा प्लेट बाउंड्री है. दैट्स व्हाई यहां पर बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं. देखो म्यांमार और इस रीजन में, है ना, वी हैव सीन म्यांमार में, यहां पे बहुत अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस आते हैं, बिकॉज इट्स अ प्लेट बाउंड्री. Your advice of elimination similarity in option was very helpful. Thank you, Chandrlekha. I'm very happy to see that you got benefit not only from knowledge point of view but from trick point of view, है ना. Which of the following countries topped World Happiness Report 2025? हाँ, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ही पार्ट है. फिनलैंड, है ना. यस. वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इंडिया के रैंक 118, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट. ठीक है, इतना काफी है, ज्यादा नहीं याद रखना. नेक्स्ट इज नेम द इमिनेंट हिंदी पर्सन ऑफ, एक्चुअली इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, हु विल बी अवार्डेड 59th ज्ञानपीठ अवार्ड. ये इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ वगैरह पूछते हैं. ज्ञानपीठ अवार्ड लिखते हैं ज्ञानपीठ, बट ज्ञानपीठ पढ़ते हैं ना. राइट आंसर इज मिस्टर विनोद कुमार शुक्ला, इज द राइट आंसर, है ना. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है ना, 8th शेड्यूल में, या अगर आपने इंग्लिश में बोला हो, मतलब जनरली देयर इज नो पोस्टहुमस कन्फरल, मतलब डेथ के बाद नहीं दिया जाता है जनरली. दैट्स व्हाट यू शुड नो. नेम द हाइड्रोलॉजिस्ट, अ पायनियर ऑफ वाटर इंजीनियरिंग, हु हैज बीन अवार्डेड स्टॉकहोम वाटर प्राइज. बताइए. राइट आंसर इज गंटर ब्लॉशल. सो डी इज द राइट आंसर. हाँ, ये जनाब है.
नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये सब पूछ सकते हैं। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट, इस तरह का जो आता ना, ये सब पूछने का चांस होता है। क्रिस्टी कोवेंट्री इज द राइट आंसर, है ना, ऑफ जिम्बाब्वे। वेरी गुड, पीपल आर राइटिंग, आई एम वेरी हैप्पी टू सी। In how many languages currently real-time interpretation, real-time मतलब live interpretation of लोकसभा proceedings are available, यानी उसी वक्त मिल जाएगा live translation proceedings you can get. In how many languages currently it is available? Proceedings means whatever they are saying, the Lok Sabha MPs are saying, or the speaker is saying everything what is being discussed. So 18 languages में अभी available है ना, उसी वक्त at the same time you can watch on YouTube, ठीक है। Next, what is the purpose of Prime Minister Narendra Modi's visit to Bangkok on 3 to 4th April 2025? So SAARC के साथ मैंने बिम्स्टेक भी बताया था, and I told you, मैंने सब कुछ बताया था, है ना, कि बिम्स्टेक को कैसे मैप से याद रखना है and how it is different from SAARC. I still remember it, है ना। So बिम्स्टेक में थाईलैंड और म्यांमार भी आता है ना। So this time we have seen in Thailand. Nobel Prize for Maths, very important. It is also called as Nobel Prize in Maths. So there are two famous awards. One is Fields Medal, that is also called as Nobel Prize in Maths, which is given every 4 years. There is another Nobel Prize for Maths, that is also famously called as Nobel Prize in Maths, which is given by Norway every year. So this is important. Masaki Kashiwara is the right answer. ठीक है, याद रखिएगा। योगा डे, ये भी कहीं पूछे थे ना शायद, somewhere. There was some question regarding it, if I'm not wrong. Yoga Day, कब मनाते हैं and what was the theme? When do we celebrate and why that day is so special? Yoga for one earth, one health. Yes, D is the right answer. Celebrated on 21st June because 21st June is summer solstice. है ना, longest day in northern hemisphere. Yes. And shortest day in southern hemisphere, उल्टा हो जाएगा, है ना, समर सॉल्स्टिस। और यहाँ पे आर्कटिक सर्किल जो है ना, यहाँ पे जैसे नॉर्वे वगैरह जहाँ पे, सो 21st जून को यू विल एटलीस्ट नॉर्थ नॉर्वे में देयर विल नॉट बी एनी नाइट, इसलिए कहते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन। 24 आवर्स सूरज दिखेगा आपको, बिकॉज टिल्टेड है तो ये ऐसे घूमते जाएगा तो पूरा सूरज की रोशनी आएगी कभी, ठीक है। यस, हाँ, ये वाला विंटर सॉल्स्टिस है, जैसे हम लोग अपन वी आर गोइंग नियर टू दिस, है ना, विंटर सॉल्स्टिस। सो शॉर्टेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आने वाला है जल्द ही, इसलिए आप देखोगे रात बहुत लंबी हो रही है आजकल एंड दिन बहुत छोटा हो रहा है नॉर्थ इंडिया में, राइट। आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। तो बहुत जल्दी सनसेट हो जा रहा है ना, 5 PM के आसपास सनसेट हो जा रहा है, और सनराइज भी देर से हो रहा है, काफी लेट से हो रहा है अभी राइट इंडिया में, है ना, बिकॉज द डेज आर वेरी स्मॉल। Actually on 21st December it will be the smallest day in northern hemisphere and the night will be very long, रात काफी लंबी होगी। आप एहसास भी करोगे खुद से भी कि ठंड में बहुत कम सूरज निकलता, बहुत कम टाइम के लिए ना। So so we are stopping this class here. Tomorrow at 5 PM we will meet with a victory lab where we'll discuss PYQs and things related with that, and plus if required some current affairs also we'll discuss. So please subscribe to the channel, press the like button. Thank you everyone, thanks for watching, have a nice day.